Yeah, no voice. No, you should be hearing now. Sorry about that. Sorry about that. Good evening. Hey, Komal, what's up? Krish, yeah. It's good now. You're able to hear me, right? Sorry about that. Sorry about that. एक second. Let me just quickly check the settings. Now it's good, right? You're able to hear me, see me, and all of that. सब कुछ ठीक है? There's something very interesting. There's a bit of a what's that? Huh. ठीक है. Cool. All right. अभी सब ठीक है ना? आवाज साफ आ रही है? You can hear me, etc. All good? Okay. Perfect. Great. तो in the last session हम लोगों ने I wrote this down right at the end of hey Arif, what's up? Okay, great. Chintu, good evening. New faces, lot new faces. That's all right. ठीक है. I said that this will get formed. This product will get formed, right? But मैंने एक गड़बड़ी कर दी थी. And Deepanvita pointed this out. Thank you so much, Deepanvita. She said that yeah, hydride shift होनी चाहिए. She was even saying in the session. I just missed out on it, right? अगर ये वाला हमको हमारा कैटायन बन रहा है, so it was much better for this guy for a hydride shift to happen and ये charge यहाँ चला जाए. That is what Deepanvita was saying and she's absolutely right? That this shift happens and this is the plus this thing that gets formed, which means that the product you would get is OH and this. Okay, did I draw that right this time? Yes, hold on. एक बार फिर से बना देते हैं. This and this. This is the product and not what I did last time. Thank you so much, Deepanvita. She pointed this out and she even made this amazing structure. Okay, cool. Last time हमने एक quick homework question लिखा था. Let me solve it. Did anybody solve it? I don't think anybody solved it. But anyway, we'll go through it. Which of the following compounds will undergo racemization when they undergo hydrolysis? अगर रेशमा नहीं अगर रेशमाइजेशन की बात हो रही है, then we are probably talking about hydrolysis racemization. What is this? What is this? Looks like we're talking about SN1 या 2. Looks like we're talking about SN1 because SN2 में Walden inversion होता है. तो if you're talking about racemization, it's probably SN1. तो we're going to identify SN1 कहाँ पे होगा? SN1 का क्या है? Tertiary, greater than secondary, greater than primary, and also weak base. हमको कोई reaction conditions दी नहीं गई है. तो looks like all we've got to do is identify कि tertiary कहाँ पे है, and that looks like it's only this guy, right? This is primary, this is also primary, and ये तो भाई ये तो कुछ नहीं होगा इसका. This is not going to happen, right? You're not going to get a plus charge over here. That's crazy. That's not going. It's not going to form a carbocation. Oh yeah, I forgot to mention that. Carbocation बनेगा, right? A stable carbocation, hence tertiary greater than secondary, greater than primary. So the answer for this one is only 4. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. What's up? अभी आवाज आ रही है, right? Krish, Arif, Chintu, Patel, Tanu. Hey, Adil, what's up? Sorry, I didn't see you there. Mohammad Adil, how are you doing? आवाज साफ आ रही है ना? All good? Shall we start with the session? The next beta elimination reaction we're going to talk about is E1 reaction. What is an E1 reaction? Just like SN1, it's a two-step process, which means that it is only dependent on the concentration of the Rx or the alkyl halide itself. Okay, this is the rate determining step. And we're going to form a carbocation here as well. And it loses a beta proton to a base, usually the solvent. तब इसमें फर्क क्या हुआ? Main फर्क है this right here. Okay, we've put a weak base and we have heat. Because we have heat, इसीलिए elimination होता है. ये मैंने last session में भी आपको एक hint दिया था कि अगर heat दे रहे हो at high temperatures, elimination is preferred, whether it's E1 or E2. हमने last time सिर्फ E2 किया था. Now we're going over E1. Okay, this is the whole deal. Now what's the mechanism? पहले बनता है carbocation and then attack होता है base का. What is the carbocation formation happening? This is it, right? Just this. It's as simple as that. Attack of base is the next step, and this is a weak base that just comes around, chills, abstracts the proton from the beta place. Like alpha is where the X goes away from, and beta position is where the base chills, slowly comes, takes away the edge. What's up? Hey, Jeru, what's up? Okay, why do you guys retract messages? I never understand that on the internet. Why do you guys retract your messages? Is that like a khufia way of communicating? I can still see your message, right? If you think it's very clever, like if you retract the message, I can just go click on it because I am admin of this and I can see what you're saying. So it's not working that well, guys. So, I mean, I'm trying to help you out over here by saying these are not messages that people can't see. Khair, anyway, stay safe on the internet, guys. Khair, this is a double bond that gets formed, and what's left over is this right here. Okay, so in this case, look at this huge group, huge tertiary butyl group, and that iodine जो मंडरा रहा है मेरे सर के पास, iodine being very big, it leaves very easily. It's a very good leaving group. This order is the same. Iodine is greater than, bromine is greater than, Cl is greater than F. Okay, that group remains the same, whether it's E1, E2, SN1, SN2, leaving group, यही अच्छा है. Khair, what's the characteristic of E1 reaction? Let's just summarize it.
ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, नॉट जल्दी, बट इट्स मोर लाइक इट्स अ रेपिटेशन। आई डोंट वांट टू बोर यू। आई होप ये चीजें अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, बट इट्स मोर ऑफ अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट्स हैपेंड बिफोर। ओके, सो बाय दिस टाइम यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट यूनिमॉलिक्यूलर टू स्टेप प्रोसेस, एंड पहला स्टेप वाज कार्बोकैटायन, oops, plus I'm going to write that, and then base, right? A weak base attacking. Okay. Reaction intermediate carbohydrate. So rearrangement यहाँ पे हो सकता है. I started this slide with a clarification. यहाँ पे मैंने rearrangement नहीं किया था. Keep in mind, in E1 and SN1, rearrangement is possible. क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है. Because a carbocation is getting formed. Okay, great. Rate of reaction is proportional to stability of carbocation, and also this right here. Okay, what are the factors that matter? Nature of alkyl halides, as always, tertiary greater than secondary, greater than first. Hey, asphalt 9, official gamer. What do you mean official gamer? All right, anyway, cool. ठीक है. Carbocation stability, tertiary greater than secondary, greater than primary. ये आप 11th science से पढ़ते आ रहे हैं. I'm gonna go into detail. You're good on this, right? कोई doubt है तो पूछ लो. What about nature of the base? The base has to be weak. Okay, this is important. It's unaffected by the concentration, but it's weak. If you put in a strong base, it could go to E2 or SN2. और E2 और SN2 के बीच में हाउ डू डिसाइड? I'll tell you that. बहुत जल्दी बताता हूँ. ठीक है. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. अच्छा, बेस का नेचर बता दिया. सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर एंड प्रोटिक. क्यों? वाई पोलर प्रोटिक? मैंने बार बार बताया है कि इन E2 एंड SN2 यू नीड ए प्रोटिक, प्रोटिक ए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट? मतलब बिना H प्लस का, बट मस्ट बी पोलर. हियर you need it to be polar and protic. क्यों? Because it stabilizes the carbocation that's formed. It greatly increases the rate of the carbocation formation. And जब बन जाता है, after the leaving group goes away, it stabilizes that too. You know, so everyone's happy. Protic मतलब H plus दोस्त. Protic proton ना. Protic word comes from proton. मतलब कि उसमें अगर H plus है तो अच्छी बात है. अगर H plus नहीं है तो अच्छी बात नहीं है. अगर आप पूछे कि अरे ये क्या होता है? DMSO is a polar aprotic solvent. Okay? अगर ये बात आपको अजीब लग रही है, look it up online or look at my earlier sessions. We have done this in detail in the last couple of sessions. ठीक है? Cool? All right. Arif, what's up? You give me 5 stars. That's a good rating. Do I get like a tip or something? I've been ordering Zomato a lot. Ignore that. ठीक है? ठीक है. Cool. So this is the deal, right? Here there is a solvated ion over here. Hey, what's up? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. What's the right way to say that? Do I say walaikum assalam now? All right, walaikum assalam. Hey, Bansab. Here's the deal, right? Solvated ions are what makes things stable. X minus, okay? X minus is the leaving group, remember, okay? Because that is Rx से निकला X minus. This gets solvated very nicely. Hey, कौन पूछा protic means what? देखो, all these guys, protic, okay? Does this solvates very well, छोटा सा है. And उसका दूसरा part, which is delta negative, it solvates the plus, the carbocation as well. Okay? So this is awesome. This is great. Perfect. Okay. Leaving group ability, ये तो मालूम है आपको. In an even reaction, the leaving group begins to get a negative charge. So अगर negative charge stable है, then it's good. Stabilization of this basically increases the rate of the reaction. Ri greater than Rbr, greater than Rcl, greater than Rf. This is consistent throughout all our 4 reactions. ठीक है? Halides X minus. Yes, bro. Come on. I feel you're trolling me right now. Yeah, bro. Halides are X. Halides are X minus. No X-Men. This is just, when I say X, it's always halide. All right. So now E1 and SN1, they respond to similar ways to both of these factors. What factors? I have a weak base and I have a polar protic solvent. So उन दोनों में से कौन सा होगा? Like how do I decide? Because and also obviously carbocation is going to get formed. How do I decide SN1 और E1 के बीच में क्या होगा? एक there's a very very fine line. अगर heat, अगर ये symbol दिया है, then almost certainly not, it's going to go through the E1 route, not the SN1 route. ठीक है? So increasing the temperature of the reaction favors the reaction by the E1 mechanism at the expense of the SN1. मतलब कि E1 होगा instead of SN1. मतलब elimination instead of substitution. Okay, cool. All right. अरे नीट की डेट आ गई. अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. अच्छा, एक मिनट. तो आ गई. कब आई भाई? मैंने तो न्यूज अभी देखा नहीं. That's great. सिलेबस क्या है अब पता चल जाए इस बार. यार ये तो मनसब आपने बहुत पते की बात पूछी. आई एम इन द सेम पेज एज यू. जैसे ही न्यूज आएगी we'll be live and we'll tell you, or we put up a short, we'll do something, we'll tell you as soon as we know. As of now we are going with the idea कि यार जो last time syllabus था वही syllabus है, इसीलिए हम लोग सारे chapters कर रहे हैं. We haven't skipped anything from NCERT, right? 5 मई. Okay, great, thanks Vishal, thanks, awesome.
SN1 is two-step reaction, three-step. अरे approximately क्यों? It is two. SN1 asphalt. I'm gonna have to ask you to watch the earlier sessions. Yeah, आज के सेशन में हम लोग E1 की बात करेंगे. E1 की बात कर चुके हैं. And now we'll compare all the other reactions. If you want to know about SN1, please refer to the other earlier videos. It is a two-step reaction. Okay, दो steps है. I know why you're saying three steps because you're saying कि एक last step है जिसमें पानी भी आके deprotonation वाला step, right? That's what you're talking about. What question are you asking? Question पूछना है तो पूछो on Telegram. Right now, if it's related to this, talk about this. Okay. Oh, here's the question. Yeah. Oh, answer though. Cool. I did not realize I was on this page already. Select the correct statement for E1 reaction. Nice, nice, nice. मतलब सब लोग कोई सो नहीं रहा है. विशाल is saying D. Okay. Jairup is saying A. और कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यार spam मत करो यार. Rahul studies. I'm going to have to mute you, bro, if you keep spamming. Vishal is saying D again. Mansab, we are doing everything on NCRT right now. Okay. Vishal is saying D again. Asphalt saying A. One. Okay. Cool. All right. So I've got two things. People saying A and D. Okay. Is it a two-step process? Yes, it is a two-step process. Definitely. Rearrangement possible? Yes, rearrangement possible है. क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन बनना चाहेगा. कार्बोकेटायन बनना चाहेगा तो मतलब rearrangement is possible. Whenever I write plus, I mean carbo-cation. Good leaving groups are favored? Absolutely. तो तीनों सही हैं. Hence D is the right answer. Great job, Vishal. Absolutely nice. Very nice. Very nice. ठीक है? Cool. So the answer to this one is all of these. Simple सा सवाल था. I just taught this to you and this is the answer to this. No doubt, right? We are good. Somebody said A. Asphalt, you good? Why it is D and not A? Okay. Which alkyl chloride? ये interesting सवाल है दोस्तों. ये बहुत प्यारा सवाल है. Which alkyl chloride would yield the following pure alkene on reaction with alcoholic KH? Okay. So I've got alcoholic KH. Alcoholic KH. This is pretty strong, bro. काफी strong base है ये. Okay. If this is a strong base, then it's probably gonna go through the E2 mechanism. Okay. But या तो E2 हो या E1 हो. That doesn't matter at this point because at the end of the day, बनने वाले हैं ये वाला product. So theoretically, I could either have the chlorine on this or on this. यही दोनों मैंने यहाँ पे draw किए हैं. ठीक है? Let's call this option A and I'm going to call this option B. Out of these two, which one do you think is the right answer? सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ. इन दोनों में से कौन सा होगा right answer? Think about it. Okay. I have to form this sort of a product. मतलब कि मुझे चाहिए double bond इधर. Okay, in the last carbon. मैंने यही चीज यहाँ बनाई है. If I were to number these, यहाँ पे भी number डाल दो ताकि आसानी हो. 1, 2. ठीक है? 1 and 2. This is the same 1 and 2 that I have over here and over here. Okay? Vishal is very confidently saying A. Jairup is also saying A. थोड़ा सोचो. ठीक है? If I go with A, then यार double bond यहाँ थोड़ी ना बनेगा. ये तो यहाँ बन जाएगा. है ना? Why will the double bond form here? This is more substituted. This is a Set Zef or Zef, whatever, however you want to call it. According to Zef rule, ये वाला बनेगा ना? तो hence be careful about this. देखो, if this was my, if the chloride group was over here and instead of here, then ये वाला बनता. But what is being formed is this right here. Do you see the structure? Always draw the line structure, okay? Yes, Vishal, absolutely. Hoffman product minor होगा. What you are saying, ये वाला होगा. This product will be a minor product in this case, right? Absolutely. Thank you, Vishal. Thank you for using those technical terms. Hence, हमारा आंसर होगा ये. Because if this is your starting point, then तुम्हारा double bond सिर्फ यहाँ बन सकता है. It has nowhere else to form. Yeah? एक ही product form होगा, which is this right here. और कुछ बन सकता है? नहीं. Because और दूसरी तरफ तो alpha है, I mean beta है ही नहीं ना. Beta एक ही तरफ है. देखो, in this case, there are two beta hydrogens. Okay, if I put a chlorine over here, let me go back there. एक बार फिर से दिखाता हूँ ताकि याद कोई doubt हो तो. देखो, this is beta over here and there is beta over here. So let's call this beta 1 and beta 2. So there are two of them. जब competition है तो Set-Zef product होगा. ठीक है? Asphalt, do you follow? Yeah? Why not this? जब if you don't remember this, I mean अगर ये मुश्किल लग रहा है, check out the last session. We've done this in detail. क्यों? Set-Zef product क्या होता है, etc. E2 के बारे में. Cool. ठीक है? Hence बनेगा ये वाला सवाल. Organic में you'll see that I'm doing a mixture of theoretical questions and MCQs. I know कि तुम्हारा टेस्ट MCQs में है, but यार इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग theoretical सवाल भी कर रहे हैं. All right. The intermediate of E2 reaction is what? Carbocation, carboanion, free radical या intermediate is not formed.
अब यार ये वाला सवाल उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इज जस्ट टेस्टिंग इफ यू आर लिटरली अवेक और नॉट, दैट्स ऑल दिस क्वेश्चन इज टेस्टिंग, और कुछ नहीं। तो हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं, आर दे अवेक? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द आंसर टू दिस वन? हाँ, व्हाट्स द आंसर टू दिस वन? ए, बी, सी या डी? अरे यार सब लोग सो रहे हो क्या इतनी जल्दी? अभी तो 9 भी नहीं बजे, पार्टी भी बाकी है ब्रो। कोमल इज सेइंग ए, ओके, जयरूप इज सेइंग ए, थैंक यू। विशाल भाई, विशाल भाई ऐसा बात करो, इंटरमीडिएट फॉर्म तो होता है ए, यस दीपक, एब्सोल्युटली राइट, या ऑल राइट, ग्रेट, कार्बोकेटायन फॉर्म, एब्सोल्युटली। बट होल्ड ऑन, लुक एट दैट, एवरीबॉडी गॉट कंफ्यूज्ड, इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। विशाल 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 बेचारा एक लौता बंदा डी बोल रहा है, उसकी बात सुन लो तुम लोग। विशाल, थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन एंड नॉट फॉलोइंग इन माय ट्रैप्स। नो नो, यू आर राइट, अब तो तुम सही हो यार, डी इज द राइट आंसर, डोंट चेंज योर आंसर। अरे रुक यार, ए नहीं है, इट्स डी, E2 रिएक्शन नॉट E1। हम लोग E1 की बात कर रहे थे, कार्बोकेटायन, ठीक है, ए था तुम्हारा गूगली। E2 में where there is a carbocation form, there is no carbocation, it's a transition state, okay, there is one last session का thumbnail में बना था बड़ा बड़ा transition state, B, और यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, IX, there is like a bond forming here and here there is like a middle thing and then it goes away, है ना? Intermediate is not formed bro in E2। सब लोग बहुत confidently A बोल रहे हैं, ठीक है, तो लग रहा है सब लोग सो रहे थे, मैं बोला कि we are checking if we are awake or not, do you guys follow, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। E1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, E2 में there is no कार्बोकेटायन, there is no intermediate, right? It's a transition state that's formed, it's a one step reaction। E2 bimolecular, guys, नहीं, कॉन्फिडेंस क्यों गॉन डाउन? विशाल, यू आर एब्सोल्युटली ऑन फायर, नो कॉन्फिडेंस गॉन डाउन का सवाल ही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम पास करता हूं, आई एम हियर टू एनकरेज यू, दैट्स माय मेन गोल, ओके, एट व्हाटएवर स्टेट यू आर एट, आई एम हियर टू मेक यू अ बेटर फॉर्म ऑफ, दैट्स द मेन थिंग, डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, डी वाज बिल्कुल सही था विशाल, गुड जॉब विशाल, ऑल राइट, इट्स ओके, you need to watch the last session because sessions are obviously connected, more than watching the last session, मैं suggest करूंगा कि आप NCERT पढ़ो, बट ये वाला पार्ट सैडली NCERT में इतना डिटेल में नहीं है, इसलिए बार बार सेशन देखने को बोल रहा हूँ, ठीक है, बट अभी फॉर नाउ स्टिक टू दिस सेशन, we'll do the last session later, cool। दीपक कुमार also saying D in the last one, good job। इस वाले में क्या हो रहा है, which of the following cannot undergo E2 reaction? अच्छा, E2 reaction, अब हम लोग सवाल कर रहे हैं सबके हो, not just E1, E2 reaction cannot go under 2 reaction। E2 में क्या था, E2 was tertiary greater than secondary greater than primary, okay, okay, हाँ, इंटरेस्टिंग। और E2 में कार्बोकेटायन बनता था, नहीं बनता था, क्या हो रहा है इसमें? D, वाई डी? डी क्यों नहीं बन सकता है? अरे अगर डी बन गया तो बहुत अच्छा होगा ना, डी से तो बेंजीन बन जाएगा, वोंट दैट बी ब्यूटीफुल? व्हाई नॉट डी? if this goes through the E2 reaction, it forms benzene, isn't that a good thing? Vishal is still saying C, going against the grain, everybody else, Shriya, Deepak, सब लोग बोल रहे हैं D, but Vishal is still confident, no, Deepak also saying C, अच्छा, Deepak and Vishal are both saying C, अच्छा, do you want to tell me why? सोचो, थोड़ा सोचो यार, यार इधर तो देखो, दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बीटा में हाइड्रोजन है ही नहीं, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो कैसे होगा E2 रिएक्शन? ओके, देखो थोड़ा मुश्किल सवाल, राइट, बट ऑल्सो बहुत आसान है इफ यू जस्ट लुक केयरफुली। आसान कैसे है? व्हाट इज दिस? इट्स अल्फा बीटा एलिमिनेशन, राइट, मतलब कि अल्फा, मतलब कि दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, क्योंकि इससे अटैच्ड है तुम्हारा हाइड्रोजन, बीटा इज द नेक्स्ट कार्बन। अब यार नेक्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन है ही नहीं, then how will the double bond form? Okay, hence the answer is C. Excellent job whoever put C, yeah, Deepak and Vishal, hats off to you, excellent। थोड़ा सा twisted सवाल था, okay, it's okay Shriya, Komal, good try, don't worry अगर आंसर गलत होता है, this is all a learning experience, सही गलत का फोकस है ही नहीं, if somebody gets these questions right, hats off to you, if you don't, it's a learning experience, okay, एक बार समझ गए कभी फिर से भूलोगे नहीं, ध्यान से सवाल पढ़ो, जल्दी में मत करो, नो एच एटम, एब्सोल्युटली राइट। बाकी में हो ना हो, मे बी थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, श्योर, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरी, बट यार दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज प्राइमरी, हो सकता है माइनर प्रोडक्ट बनेगा, हो सकता है, ठीक है, ओके। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन्स
in the elimination reaction is what? Now you got a phenyl group, doesn't matter, just a distractor, ठीक है? एक phenyl group है और यहाँ पे ब्रोमीन बना हुआ है. Think of phenyl just as R, ठीक है, ताकि थोड़ा confusion ना हो लाइफ में. तो इतने कितने एल्कीन बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पूछा गया है, ठीक है? अभी थोड़ा आइसोमेरिज्म ध्यान में रखना, थोड़ा ध्यान में रखना. I'll solve this one for you. नंबर दोगे तुम लोग? Will you guys give me number? एस्फॉल्ट थोड़ा मुश्किल लग रहा है. ये है हेलो चैप्टर ऐसा यार, दिस सेकंड, आई मीन दिस इज 12th grade chemistry, right? So 11th थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. But it's okay. It's okay if you're not able to answer questions in my class, but if you're able to follow what I'm saying, that's enough. You will top NEET. I'm not messing with you. You will top NEET if you're able to follow what I'm saying. Okay. Vishal is saying 5. Deepak is saying 4. ठीक है. Let us see. Let us see कितने बनते हैं. ठीक है. Here is my first alkene. एक टाइप का alkene. Maybe, may not be major product. May not be major product because ये जो दूसरा वाला है, ये more substituted है. Right? So maybe this is major, this is minor. ठीक है. 4 और 5 you're confused. Why 4 और 5? 5 कैसे बने यार? Can you give me your logic between how are you thinking 4 and how are you thinking 5? देखो, जब एक डबल बॉन्ड आता है, when a double bond comes into the picture, then cis trans isomerism could also come into the picture, right? Okay. But cis trans isomerism तभी होता है जब दोनों ग्रुप सेम ना हो. देखो, यहां पे दोनों ग्रुप सेम है, तो no cis trans isomerism in this case. Let me use a different color ताकि कोई डाउट ना हो. Let me use blue. I always use blue when things are really important, right? No cis trans isomer for this. तो इसका हो गया नंबर 1. इसका हो गया 2. कैसे? This is maybe A configuration. Cis trans नहीं तो EZ बोल सकते हो, whatever you want to call it, right? A configuration, this is other configuration. चलो मैं इसका H भी ड्रॉ कर ही देता हूं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो. देखो यहाँ पे भी H ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी H ड्रॉ कर दिया. ठीक है? Cool. So total number of products is 3, not 4 or 5. Can you give me logic between 4 और 5 कहां से आया? Like where do you think और कुछ हो सकता है? Did you think that maybe a double bond could form here? That's not likely. ठीक है? Because this phenyl group, and it's not a dummy group, this happening, ये नहीं होगा, right? Then carbon would have too many bonds. This is not going to happen. अगर ये करोगे, if you make a double bond over here, then this guy gets disrupted. Okay? ये बनाओगे, then this benzene का stability goes away, which is not good. तो इसीलिए this is not going to happen. I'm guessing you were going towards 4 or 5 because of this. क्या? You thought कि यहाँ पे भी double bond बन सकता है? Guys were saying 4 or 5. Let me know what was your idea behind the number 4 or 5. अभी ये समझ में आ रहा है कि कैसे it is 3, 2 cis trans इस वाले configuration का, और वो जो दूर वाला है उसका 1. Cool? So you got the total number as 3. We okay? बहुत लोग 4 या 5 बोल रहे थे, इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूं. कोई डाउट है तो बोल दो. Hey Vidyalakshmi, good to see you here. Hirdesh, Asphalt, Komal, Deepak, you're okay? You guys are all right? Shall we move on to the next question? Questions की difficulty धीरे धीरे बढ़ रही है, but that's okay. अगला वाला सवाल I'll help you with. ठीक है? Okay, great, Sarfraz. Thank you, Sarfraz. 3, absolutely. ये इस चीज का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये सवाल था एम्स का 2009 का. ठीक है? Shreya, all right, great. Thank you for the input. What's happening here? We've got a multi-step reaction. Now, this question represents either a JEE main or an advanced question. Normally, NEET में इस टाइप के सवाल आजकल नहीं आते हैं, but that's okay. We are going one level or maybe 2 levels above the current NEET because we are in this mode of learning. हम लोग समझना चाहते हैं पक्का, inside out. ठीक है? Step by step करते हैं. If you guys want, Hirdesh, thank you for giving me the answers 3 of the previous one. In this question, what do? एक step 1 by 1 करते हैं. You've got a lot of options over here. अगर कोई खुद सॉल्व करना चाहता है तो उसका स्क्रीनशॉट पे सॉल्व करे. I'm going to start solving this question for you, right? One step at a time. Major product हर समय निकाला जा रहा है. तो पहला वाले में क्या होता है? In the first one, bromine gets added on. Now, bromine could get added on anywhere. यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, anywhere. But it's going to get added on to the more substituted part, okay, which is right over here. ये हमने right in the first session we did this. We did this right in the first session. The easiest way to make a haloalkane is to just provide enough energy by light, cleave the bromine bond. It's homolytic cleavage. Okay, free radicals are formed, and उससे 1 मोल मैंने दिया तो सिर्फ इतना बनेगा. Major product we are asking for.
नो प्रॉब्लम, एसफॉल्ट, गुड जॉब, दैट्स ओके, इट्स ओके, लॉजिक अच्छा बुरा कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, बट थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट टू टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग. विशाल इज सेइंग सी, ओके, आई विल लॉक सी फ्रॉम विशाल. ओके ग्रेट, थैंक यू विशाल, ब्यूटीफुल. सो ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट एक्स. वाई क्या होगा? अल्कोहलिक क्यूएच एंड हीट. सो यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड योर हीटिंग. मतलब यहां पे क्या होगा? एलिमिनेशन हो गया. ठीक है, दिस क्लियर दैट दिस इज एलिमिनेशन. कोई डाउट है तो बता दो. जस्ट गिव मी अ स्मॉल yes in the chat if this is okay. Hriday saying C, Vidya Lakshmi saying D. Okay, great. Is this clear for the other folks who are listening in and not really interacting on the chat? Is this okay? How your elimination है? Just give me a small yes. Okay, great. Elimination में क्या होगा? जो आया था वो चला जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाता है. That's it. Simple, straightforward thing. And because this is strong base, you may say कि कार्बोकैटायन फॉर्म होता है नहीं होता है. It's immaterial. Okay, in this case, sure, this is E2 mechanism. कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता है. अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता तब भी you would have this plus charge over here. Okay, things could get a little interesting अगर कार्बोकैटायन होता. There could be a ring closure and all that, but right now that's not happening. Okay, because it's going through E2 वाला stage. Okay, cool. Last step is interesting. अभी हम लोग ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते हैं. Let's see. It's an anti-Markovnikov addition that happens because of peroxide. Okay, that's the important thing, which means कि bromine just gets added over here. ठीक है, and that means your answer is option C. Okay, the option A was there to confuse you because अगर आपने सोचा होता, if you thought कि maybe this E1 कार्बोकैटायन बन रहा है तो maybe there could be a rearrangement and all that because ring जो है six membered ring is a lot more stable than a 5-membered ring, etc. But that doesn't come into the picture over here. It's not that complicated. ठीक है, मेन थिंग टू नो दो चीजें थी कि पहला BRI है यहाँ पे. ठीक है, that was step number 1. This is number 1. Next was this is simply just an E2 mechanism. Double bond gets formed. जो आया था वो गया और double bond बन गया. Lastly, this anti-Markovnikov addition, which means कि instead of bromine adding to the more substituted carbon, it'll go to the less substituted carbon. ठीक है, that's it. विशाल, ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने. I'll have to look that up, dude. There are a lot of, well, I mean, theoretically you can, right? I don't know if there's any law against it. Like, can you get the degree? Can you not get your practicing? I'll have to look that up. But to help with your color blindness, there are some very cool, apparatus that you get these days. There's a lot of very, very nice research going on in nanotech, by the way. Vishal brought that up. Ping me on Telegram. I'll share it with you. I was reading about it a couple of days back itself. Yeah, very interesting stuff. I don't know the law, if that's what you're asking me, Vishal. Sorry. Okay, next question. Reactivity of order of halides for dehydrohalogenation. हम लोग क्या कर रहे हैं? Dehydrohalogenation. मतलब हम लोग निकाल रहे हैं हाइड्रोजन और हम लोग निकाल रहे हैं हैलोजन. तो इस केस में what is the reactivity order? मतलब this is just elimination. Okay, what is the order of halides? चलो बताओ. ये वाला तो डायरेक्ट है. मैंने बताया था कि leaving group ability is the same whether you have elimination or you have substitution. E1, E2, SN1, SN2, किसी में भी leaving group ability is the same. Okay, so if the halogen is really, really large, it leaves very easily. So the order is simply going to be iodides, Ri greater than Rbr, greater than Rcl, greater than Rf. बस कहाँ है वो? किस वाले में है? B. So B must be the answer. ठीक है? Okay, Vishal, good job. Komal, awesome. Bye. All the best, Asphalt. All the best. Thank you for joining. See you. All the best. Anjana, absolutely right. B is the right answer. ठीक है. Cool. Aakash, I'm sorry. Asphalt, if you have any doubts, you can always ping me on I Teach Chem, okay? On what do you call it? Discord or on Telegram. Anything chemistry related. Okay, let's move on to this stereochemistry idea of E1 reactions. Remember, I told you, जब भी double bond बनता है, double bond बनने में, there is a chance कि, stereochemistry एक favor हो और दूसरा favor ना हो. What do I mean? Geometrical isomerism, cis trans. That's what I'm talking about specifically. Trans alkanes are lower in energy. It says because of steric reasons. ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था
कि it has more operations of symmetry. Now I know ये काफी unlikely है कि you have been watching all the sessions stereochemistry के and then all of this, so maybe you have not seen it, but if you want know this in detail, when we introduce this, मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे उसके it's got more operational symmetry than cis alkanes, hence it's more stable. Okay, so even reactions favor the formation of trans alkenes. Okay, that's the main takeaway from here. Stereochemistry का ये है. So the major product would be this guy and the minor would be this, and then I've taken a very straightforward reaction where I've just taken butane, okay, substituted the second carbon with a bromine atom, which means it's bromobutane. If you want it's basically 2-bromo-butane, right? And इसका हम लोग कर रहे हैं E1 से elimination. E1 मतलब डाल देंगे weak base and we'll heat. Okay, that's it. Weak base and heat. Once we do that, this guy gets formed over here, and yeah, there you go. But that double bond, and the major product is a trans product. Let me write that down here as well. I'll share these notes with you. You don't have to write all this down. Okay, I'll share this with you on Telegram. So what's the recap of everything we've done so far? In E1, reactive alkyl halide 3-1. There is no rearrangement. Why no rearrangement? क्योंकि भाई there is no carbocation. रुको सोचने दो, उल्टा लिख दिया मैंने. E1 E2 मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ. E1 में बनता है कार्बोकेटायन, E1 में बनता है, SN1 में बनता है. आई एम ब्लैंकिंग आउट राइट नाउ. या एब्सोल्युटली कार्बोकेटायन बनता तो है. क्या बोल रहे हैं? कार्बोकेटायन बनता है, राइट? यूनिमोलिकुलर या बनता है. विशाल क्या करें यार? द थिंग इज सी, अब मैं क्या बोलूं, सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी. इट्स लाइकली कि आजकल ना पूछे. सो इन एनसीईआरटी, राइट, दे हैव डन समथिंग. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विशाल. In NCERT, they teach you some concepts, and then back of the book questions may they ask you a little bit more than that concept. And if you don't do that, then life could be difficult. So what we're trying to do is we're covering everything that's in NCERT, and we're covering things that are there in the questions. If you'll attend the ionic wala sessions, the coming ones, you will see that we are teaching a little bit extra than that's in NCERT, so that you're able to solve those questions also. ठीक है? तो ये E1 E2 का पूरा कहानी बता रहा हूँ. देखो, at the end of the day, whether E1 हो रहा है E2 हो रहा है, you just need to know final product क्या बन रहा है, right? You don't, even if you don't remember E1 E2, you know कि अच्छा ये weak base आएगा तो ये होगा, कार्बोकेटायन बनेगा नहीं बनेगा, that is enough. ठीक है? Remembering the name E1 and E2 helps in the whole वो बारीकी में जाके just making sure that even the toughest question is done. Otherwise all you need to know is कार्बोकेटायन बनता है नहीं बनता है, strong base weak base, that's all. ठीक है? कार्बोकेटायन उसमें बनता है और है weak base. कहाँ है लिखा है? यहाँ weak base लिखा है. Unimolecular, okay, 1 means dependent on Rx, that's the rate of the reaction. Okay, great. Polar protic solvent, 2-step, etc., etc. चलो एक सवाल करते हैं. Elimination reaction of 2-bromopentane to form pentuene is, 4 चीजें. देखो, इस टाइप का सवाल is more likely in NEET. 2020 में आया था, more likely क्या, NEET में आ चुका है सवाल. ट्राई करो, ठीक है? This is more. Here see, it's talking about SEDSEF. देखो, it's not about E1 E2 and all, but you have to figure this out, है ना? बताओ, what do you think is going to happen here? A, B, C, D, इनमें से कितने का? अरे यार, this is a scam. This is a very advanced kind of question, right? They give you 4 things. उसमें बताओ इसमें से कितने सही हैं? This is like a multiple select question. Still +4 -1, but yeah. Vikas is saying A. Okay, A, B, and C. Beta elimination, absolutely correct. Follow SEDSEF, absolutely correct. Dehydrolysis, yes. Dehydration नहीं. Dehydration मतलब पानी निकलता है, जो मैंने पानी भी पिया ना, मतलब H and OH निकलता है. That's not true. We are removing H and Br. Hence, this is not true. Absolutely right. Good job, Vishal, 3 बार, and Mr. Hirdesh ji and Lavish. Hey, Lavish, I haven't seen you around. Good to see you here. Vidya, absolutely right. A is the right answer. Good job, everybody. Good to see all of you are alive and kicking. Okay. Intermediate of E1 reaction is what? अब ये गूगली वाला नहीं है, straightforward question है. Vidya, absolutely right. A is the right answer. What about this one? How do I pronounce your name? Lavish? Is it lavish or is it lavish? It's not lavish, right? It's lavish, like A. Khader ji, yes. C. Acha. Intermediate E1 is C. I'll give you a bit of a hint. It's not C. हमने free radical की अभी तक in all our discussion free radical ज़्यादा बात की नहीं है. At least in this session. 11th we were talking about free radical mechanisms were chlorine, Cl2 becoming, giving you 2Cl, sure, maybe there.
बट हम लोग इंटरमीडिएट ऑफ इवन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इवन रिएक्शन का इंटरमीडिएट, अरे बी, एक मिनट, आर वी लुकिंग एट द सेम क्वेश्चन? व्हाट्स हैपनिंग गाइस? खादेर एब्सोल्युटली राइट, ए इज द आंसर, कार्बोकैटायन, राइट? इवन रिएक्शन में बनता है तुम्हारा, अरे अभी तो किया सुबह को, सुबह मतलब आधा घंटा पहले, आधा घंटा भी नहीं, कितना समय पहले, आधा घंटा हो गया क्या? 8:30 बजे शुरू किया था, हाँ आधा घंटा पहले। रुको दोस्तों, क्या हो गया, दिखाते हैं फिर से। ये बना ना तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इवन रिएक्शन है। ओके, आई एम गोना गो बैक एंड ट्राई एंड फाइंड दैट स्लाइड नंबर दैट आई वाज एट राइट नाउ। कहाँ थे हम? ये कहाँ? I'm really bad at singing, but I'm still going to find it. No, not here. Give me a second. Very confident he went back. Oh, there you go. मिला क्या? हाँ मिला। Carbocation यार, carbocation guys. Do you agree with Khader ji and also what I showed you? Shakya ji, Vishal. This is carbocation. Okay, nothing else. All right, sweet. Let's now move on to a very interesting question. Which of the following compounds most readily undergo even reaction? Even में क्या था? Reaction condition याद करो. Weak base, अरे base तो यहाँ पे है ही नहीं. Carbocation. That's what I'm going to focus on. Carbocation is going to be my game changer. What is even? Weak base, carbocation and heat. ये तीन चीजें थी, करेक्ट? देखो मेरे साथ ही सीख लो, मैं बोल रहा हूं तुम लोग सुन लो, याद कर लो, सुनते सुनते जितना कर सकते हो। इट्स ओके विशाल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाद में देख लेना। अंजना इज सेइंग सी, ओके, हृदय सेइंग सी, मोहम्मद आदिल इज सेइंग ए, ठीक है। देखो ए और सी के बीच में कंपटीशन है। आई एम वेरी हैप्पी नोबडी सेइंग बी एंड डी। आई एम रियली हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर सेइंग ए एंड सी। ए और सी के बीच में कंपटीशन है डेफिनेटली। कार्बोकैटायन यहाँ पे भी टर्शरी है, यहाँ पे भी टर्शरी है। लेट्स मार्क ऑफ बी एंड डी। बी और डी नहीं होगा, ठीक है। ए और सी के बीच में कैसे करोगे डिसाइड? यार बेटर लीविंग ग्रुप इज आयोडीन, रिमेंबर, बड़ा, हैप्पीली goes away, polarizable, very big ion, right? Goes away. Hence, C is the answer, okay, and not A. We okay? C is the right answer. ठीक है? Great question, because it's checking two things: carbocation and also leaving group ability. Leaving group better. ठीक है? Awesome. चलो एक और महत्वपूर्ण सवाल और इसके बाद हम लोग will move on to the next part of this session. This one I'll try and teach you, okay? I'll walk you through this. Absolutely right with you. Adil, good that you follow. In this reaction, what is the major product? अरे ये कैसा रिएक्शन हो गया? साइक्लोहेक्सेन है, okay. You got a weak base, मतलब बन सकता है तुम्हारा कार्बोकैटायन? हाँ बन सकता है, नहीं बनेगा ही, इवन है, ओके। तो दो चीजें बन सकती हैं, राइट? Either this or this. What do you think is going to happen? इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? सोच के बताओ। ओरिजिनली बनेगा आपका कार्बोकैटायन। अरे क्या हो गया? आज हमसे साइक्लोहेक्सेन नहीं बन रहा है। आई थिंक इट्स दिस कॉन्फ़िगरेशन। जब ऐसे बनाओ ना तुरंत बन जाता है। जब when you make in this weird way, then it's a little hard for some reason. खैर, you'll notice that मैं बार-बार इस टाइप से बना रहा हूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ ठीक है, दिस इज अ टर्शरी कार्बोकैटायन, सो इट कुड फॉर्म अ डबल बॉन्ड हियर एंड हियर, बट द मेजर प्रोडक्ट, द सेफ प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द मोर सब्स्टिट्यूट वन, हेंस बनेगा यहाँ पे। क्विक चेक, अल्फा हाइड्रोजन, यस है, 3 कार्बन है ना, चौथा मतलब हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो दिस गोज अवे एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ऑलराइट। कैसे क्या बना दिया? Adil ji, what are you talking about? A is a major product, yeah. Which one are you talking about? Adil? It's all right. ये वाला मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? कार्बोकैटायन तो बन गया, बट नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? या यू गॉट मल्टीपल बीटा हाइड्रोजन्स हियर, बीटा 1, बीटा 2 equivalent, बीटा 3, right? Beta 1, beta 2 are equivalent. We're not going to worry about that. Beta 3, which is this guy right here, is quite substituted. It has just one hydrogen, happily goes away. This is a major product. Cool. Okay. Saloni, good to see you. Good job. Good answer. Shakya ji, Vishal, absolutely right. Product. अच्छा बना लिया, मतलब सी मोस्ट ऑफ द राइटिंग आई डू बिफोर द सेशन, इसलिए मैं सेशन में थोड़ी तैयारी में टाइम लगता है मुझे लाइफ में। देखो हैंड्स फ्री बन रहा है, इट्स एनिमेटेड, राइट? बिकॉज़ आई वांट टू मेक श्योर कि
आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसलिए मैं पहले थोड़ी तैयारी करके आता हूँ. तो ऑल द येलो स्टफ आई एम लेटिंग यू इन अ ट्रेड सीक्रेट. ऑल द येलो स्टफ आई एम राइटिंग ऑन द स्पॉट. सफेद स्टफ पहले से लिखा हुआ है, दैट इज बीइंग एनिमेटेड. तैयारी करके आना चाहिए लाइफ में, तभी तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा. खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट शोज E1 रिएक्शन. इन चारों में से E1 कौन सा जाएगा? E1 मतलब फिर से लिख देते हैं, वीक बेस, बेस छोड़ो, डजंट मैटर. कार्बोकेटायन, कार्बोकैट आयन इज द मेन फोकस ओवर हियर. ठीक है, बी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, राइट. सो बी और ए को हटा देते हैं. आई एम मेकिंग योर लाइफ इजी फॉर यू. चलो सी और डी के बीच में बताओ, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? या आदिल, यू गुड राइट? सब ठीक है? डी, खादर से डी. देखो, if you go with just that carbocation wala idea, if you're wondering what's that behind me, that's the session link. Yeah, when I move this chair, swivel around, I've put this behind so that you can say on the notes, when you click on this, it actually goes to session. Pretty cool. Telegram, you can do that. Some of you are saying C, some of you are saying D. Khadir ji is saying D, Vishal ji is saying C, Mohammad Ali is saying C, Vidya Lakshmi is saying A. Vidya Lakshmi, it will not be A because A is primary. ठीक है, नहीं होगा A. B नहीं होगा because plus charge on this benzyl thing, that doesn't happen so much. ठीक है, that doesn't happen. तो इन दोनों को हटा देते हैं. Saloni saying C, okay. Is it meant to be C, Khadir? Yes, sorry to disappoint, but it's okay. Learning experience. C is the right answer. I'll tell you why. बहुत interesting है. D is not the right answer because इसमें strain है. This is thing called Bayer's strain. A little complicated idea, but basically this is called a bicyclo compound. Okay, and इधर a carbocation being formed here is not good for anybody. ठीक है, so it does not happen. Rather, अगर ये D नहीं भी नहीं, it's okay, it's all right. अगर D नहीं भी, if you're not so sure about this ना, ये एक distractor option है. Look carefully. Look at C. Look at C. It may seem like ये primary है, क्योंकि यार इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, right? अरे, तो देखो, इसमें E2 नहीं होगा, right? Because there's no alpha hydrogen, E2 नहीं होगा. Definitely E2 नहीं होगा. That's the main thing to do over here. Yeah. श्रेया, ये सब mistakes नहीं है. These are learning experiences. गलती नहीं है. हम लोग सीख रहे हैं, we're learning together. It is confusing. Yeah. Organic का level मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, right? Because I know कि अगर मैं physical में level बढ़ाऊंगा, then आप लोग सब डर के भाग जाओगे, बोलोगे मैथ्स है. यहाँ मैथ्स नहीं है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने sneakily level थोड़ा बढ़ा दिया है. ठीक है. Now, E1 is a second order reaction, Vishal. Okay, hold on. एक बार बोलते हैं. Because यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, E2 नहीं हो सकता है. E2 में क्या था? अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं हो सकता है. बट E1 हो सकता है, क्योंकि E1 में हमारा बनता है कार्बोकेटायन. एंड अगर कार्बोकेटायन बना, तो देखो, वंडरफुल थिंग्स हैपन. देखो, हियर इज माय कार्बोकेटायन. एंड लुक एट दैट. देयर इज अ ब्यूटीफुल शिफ्ट. ओके? Look at that, methyl shift, so to speak, happens. Methyl है कि hydride? नहीं, methyl shift. पूरा ये बंदा, this guy just basically comes here and this charge goes here. ठीक है? The product that you get is this. Look at that, such a wonderful thing, right? You may think कि initially you may think कि यार C में तो reaction ही possible नहीं है. There is no alpha hydrogen. कैसे होगा reaction? अब सोचो, है ना? अगर ऐसा shift हुआ, then it's possible, right? Technically, actually, this is also a hydride shift, ना, because ये अगर इस तरफ गया, if this gets a plus charge, and I would technically say that this hydrogen goes here. नहीं, that also does not make sense. खैर, anyway, yeah, not methyl shift, the hydride shift. खैर, ये doesn't matter, methyl shift, hydride shift, but this is what happens, and you get a tertiary carbocation over here, and this forms this product. Pretty cool, right? Pretty cool question. Yeah. Any doubts, guys? C कैसे हो जाता है? Yeah. E2 डेफिनेटली नहीं है बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता E2 में. E1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. वी हैव डन द रीअरेंजमेंट ऑन टॉप ऑफ माय हेड. दैट्स द प्रोडक्ट यू गेट. थोड़ा भारी हो गया, राइट? ओके, चलो, विल टेक थिंग्स डाउन अ नॉच. लेट्स डू सम थ्योरी. चिल थ्योरी थोड़ा करते हैं. एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, हाउ डू यू डिसाइड कौन सा होता है? देखो, all nucleophiles are bases, all bases are could be nucleophiles, but here's the deal, right? The main thing is the unshared electron pair. That's what reacts. Now, nucleophile substitution reaction and elimination reaction, they always compete with each other. How do they compete? अगर हमने reaction conditions properly लाए या फिर अगर कोई ग्रुप बड़ा हुआ कोई छोटा हुआ, that's what decides. Okay.
SN2 और E2 के बीच में कंपटीशन होगा, SN1 और E1 के बीच में कंपटीशन होगा। इसीलिए हम लोग E1 और E2 को अलग से पढ़ा रहे हैं इन आर सेक्शंस, राइट। एलिमिनेशन आई नो उसमें नहीं है, बट कंपटीशन इज दिस वे, SN1 वर्सेस E1 एंड SN2 वर्सेस E2। मतलब कि SN2 और E2 की रिएक्शन कंडीशन सेम होंगी। देखो, SN2 और E2 आर बोथ फेवर्ड बाय अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और अ बेस, ठीक है। एंड यू नीड टू हैव अ बीटा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि कार्बोकैटायन बन के शिफ्ट नहीं हो सकता है कुछ, यू नीड टू हैव अ बीटा हाइड्रोजन एटम। ओके आदिल जी, आपने बहुत ही ट्विस्टेड सवाल पूछ लिया, मुश्किल सवाल पूछ लिया। यू पिंग मी ऑन टेलीग्राम, आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट। ये तो धर्म संकट वाला सवाल पूछ लिया। हाउ डू आई जस्ट टीच, आई आल्सो टीच केम। यू जस्ट स्टार्टिंग, हाँ, ओके कूल, आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट। देयर आर लाइक सम क्विक स्ट्रेटजीज। काफी टाइम है वैसे, 6 महीने ना, 6 महीने में हो जाएगा तुम्हारा मार्च, बोर्ड में 1 महीने लगा लो, 7 महीने बहुत टाइम है। हाउ टू कंप्लीट, आई विल नॉट गिव यू फॉल्स होप, कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, राइट, बट वी विल फाइंड अ वेज टू डू द बेस्ट ऑफ इट, ठीक है। चलो, सो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, यू गॉट दीज टू थिंग्स गोइंग। हाउ डू डिसाइड क्या होगा, पूरा स्कीमेटिक है, टेक अ यू नो नोट्स में आराम से देख लेना कैसे होता है। आई हैव जस्ट कंबाइंड एवरीथिंग वी हैव डन सो फार, ठीक है। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस है, या फिर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, या फिर साइज ऑफ बेस बड़ा होता है, दीज आर 3 थिंग्स वी लुक एट। सो इफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कि तुम्हारा मेन कंपाउंड विच इज अल्काइल हैलाइड, ओके। सो इफ योर सबस्ट्रेट is basically where the reaction happens, is a primary halide and a base is a strong acid and it's unhindered like the ethoxide ion, then आराम से अटैक कर देगा and substitution is going to be preferred। मतलब अगर छोटा सा तुम्हारा पास ये you've got a primary alkyl halide and the base is able to attack easily, then major product is this। यही तो था, something like this was in the thumbnail, right? E2 भी बनता है, कम बनता है बट बनता है। Now if I change it up, अगर secondary halide कर दिया, then भाई secondary halide में because जगह नहीं होती है for the nucleophile to come and attack, it's like यार steric hindrance है, and I've told you just बार organic chemistry में तुम जितना रूल पढ़ लो, steric hindrance trumps all those rules। Steric hindrance is a party pooper। If there is steric hindrance, that will always dominate every other effect, ठीक है। इसलिए देखो 20% हो गया from 80%, and 80% ये वाला हो गया, ठीक है, cool। What if you have a tertiary halide, भाई tertiary halide है तो भाई रिएक्शन नहीं होने वाला, सिर्फ एलिमिनेशन होगा। देखो 9% कुछ है, 90%, ठीक है, कूल। हाँ यार विशाल, जितना जो पढ़ाना पढ़ा लेते हैं, सब पढ़ा लेते हैं, सब पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक इनफैक्ट थोड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, बट एवरीथिंग एल्स ज्यादा आसानी से पढ़ाते हैं। ओके कूल। सो लाइक इन शॉर्ट, आई डोंट थिंक आई विल बी कंफर्टेबल टीचिंग एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट आई हैव सॉलोमन्स, बेस्ट बुक एवर, पढ़ के पढ़ा लेंगे, सब पढ़ा लेंगे, जो आप चाहो वील टीच। टेम्परेचर का क्या डील है, ओके। If you increase the temperature, elimination होता है। We've done this. I won't spend too much time on this. This is sure, clear. Okay. Size of base nucleophile. अगर छोटा न्यूक्लियोफाइल है तो आराम से अटैक कर सकता है, अगर बड़ा न्यूक्लियोफाइल है तो एलिमिनेशन होगा, ठीक है। सो इफ यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टीयरिकली हिंडर्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोला सेम चीज अंग्रेजी में बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग स्टीयरिकली हिंडर्ड बेस सच एज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, बहुत बड़ा बेस है, फिर होगा एलिमिनेशन, ठीक है। इन दिस केस what kind of base do I have? I have a small base, unhindered small base and nucleophile. In this case 99% हो रहा है SN2, 99। E2 भाई हो ही नहीं रहा है practically 1%। The moment I change that up to a strong base that's huge, look at that 85-15 बिल्कुल बदल गया, ठीक है। This was SN2 versus E2। Any doubts? कोई डाउट है पूछ लो प्लीज, कोई डाउट है तो, ठीक है। ये वाला सेक्शन बहुत सिंपल है। SN1 वर्सेस E1 इज अ 1 मिनट सेगमेंट, तो कोई डाउट है तो पूछ लो। SN2 वर्सेस E2 जरूरी है। SN1 वर्सेस E1 सेम कंडीशन, सब कुछ सेम है। मेन डिफरेंस इज, आई एम गोइंग टू रिपीट द कंडीशन अगेन, ना वो 10 बार कर चुका सेशन, एक बार फिर से करते हैं। कार्बोकैटायन कॉमन इंटरमीडिएट, they react in the same way almost, मेन चीज है कि you got a form of carbocation, you got a pure poor nucleophile weak, and you need polar protic solvent। तो फर्क क्या हुआ? टेम्परेचर, only difference is temperature। if you have heat, यानी कि that triangle, I'm not trying to make a heart here, okay, I'm really bad at that। how do you do anyway, hey, I think this is being a little, it's good, I thought you had rather delocalization term में confusion है। ping me विशाल on I teach Chem,
I'm not gonna write again. You ping me on I teach Chem, I'll help you out with whatever. Don't worry. Russell, how these compounds look in real? There's a beautiful book called Claydon. उसमें डिटेल में दिया है. Again, ping me on I teach Chem. I will share resources with you. Chemistry can get very interesting अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो मजे के लिए, just for time pass, not as a test or anything. It's a very good question, Russell. 3D wedge dash models are the best ways of of showing how they look like. I'll give you interesting resources, 3D stuff that you can look at. Okay. This was answering Russell's question. Okay. So that people don't get confused of how जो बाद में notes देखेंगे, how do these look? Okay. ठीक है. If you increase the temperature, then even reaction होगा favor. That's it. Simple है. तो okay. Summary. Elimination with substitution. Methyl सिर्फ देता है SN2 reaction. क्योंकि यार methyl में where will eliminate? There's no second carbon, right? There's nothing to eliminate. Okay. ध्यान से पढ़ो. Methyl में there's no chance of elimination. Primary alkyl halide SN2 बाकी नहीं करेगा. Mostly SN2. Unless I give it a very very strong base which is very hindered, then it will give E2. ठीक है. जो हमने सब चीज की अभी 2 स्लाइड में 3 स्लाइड में खत्म हो जाएगा. इन 2 स्लाइड में. That was the first slide. This is slide number 2. Okay. Cool. Secondary alkyl halide is like ये भी दे दो वो भी दे दो कुछ भी चलेगा. But अगर मैंने strong base दिया तो E2 और अगर weak base दिया तो या SN2. ठीक है. This is very interesting. Weak base दिया तो SN2, strong base दिया तो E2. Tertiary SN2 होता ही नहीं है. SN2 is that spoil sport which will, बहुत ही नवाबी है. It will do primary but will not tertiary, तो छुएगा ही नहीं SN2. So there's a competition between SN1 and E1. Lower temperature पे करेगा तुम्हारा SN1, higher temperature पे करेगा E1. ठीक है. Strong base E2. Okay. This was a summary. थोड़ी बहुत theory, and the problem is in NCERT सिर्फ ये theory का application use है, which is these 2 slides. But अगर मैं पिछले 40 मिनट आपको ये सब नहीं पढ़ा था, then आप रो दे दे, like यार ये क्या है, इसको मैं कैसे याद करूं? There's like 10 things to remember here. Okay, it's got a little out of focus. I'm just gonna quickly deactivate this camera and activate it again. Weird, man. I don't know why this keeps happening. Autofocus thing, right? Tech, first world problems. Okay, this was elimination versus substitution. Quick question लेते हैं, उसके बाद we'll wrap this session up with some very interesting ideas about Grignard reagents. Here's the question. Which of the following statements is incorrect for alkyl halide? बताओ, इनमें से incorrect statement कौन सा है? E1 reactions are favored by the use of weak bases and polar protic solvents. E1, SN1, E1 जो SN1 का है वही E1 का होगा. मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि SN1 याद करो और SN2 याद करो और E1 and E2 उससे एक स्टेप ऊपर है. जब अपना नोट्स बनाना, मैं तुमको नोट्स दे दूंगा, बट मेक योर ओन नोट्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. शक्या जी सेइंग बी. यार मुझे बी तो सही लग रहा है. बोथ E1 and SN1 are favored with substrates that can form stable carbocations. Absolutely. और rearrangement भी होता है, right? So this seems right. ये भी सही लग रहा है. Polar protic solvents and weak bases. मैं 10 बार लिख चुका सेशन में. ये ना unimolecular reaction. Unimolecular मतलब SN1 and E1. देखो ये भी हम लोग बात कर चुके हैं. In a unimolecular reaction, increasing the temperature favors E1. अगर ये 3 सही है मतलब this must be wrong, that must be the answer. एक बार देख लेते हैं. A strong sterically hindered base such as tertiary butyl oxide favors substitution reaction. Yes. नहीं, ये तो गलत है. अगर strong steric hindered है, अगर hindered base है, तो भाई how is it going to attack the substrate? बड़ा है, कैसे अटैक करेगा? बड़ा है तो eliminate करेगा. ठीक है. So this will go through the eliminate वाला route. Eliminate वाला route मतलब tertiary butyl oxide मतलब strong base. So this goes through the E2 mechanism. Hence D must be the answer. Absolutely right, Vishal. Vidya, good job. D is the right answer. Cool. Let's talk about reaction with metals now. We're going to focus mainly on Grignard reagents right now, and Woods reaction हम लोग करेंगे अगले सेशन में. Carbon और metal के बीच में bonds. Organometallics, yeah. This chap literally got the Nobel Prize for figuring this out. Victor Grignard. These guys, I mean, I think they spent a lot of time styling their hair because all these photos, all these scientists have very fascinating hair, or they have a lot of time in life to do this. Look at that. You gotta grow that mustache, and then you gotta I don't know. Anyway, okay. Organomagnesium halides. Okay, that was his main contribution to science.
He received the Nobel Prize in 1912. And look at that. On the coin, he's got I think, and this is a conspiracy theory, right? When they pose for coins or portraits, they become a lot fancier. Look at that beard there. No time to shave. Vishal, maybe that's the reason. Yeah, no time to shave. Khair, we call them Grignard behind him. There's a bit of history here. Yeah, you can take a look at all of this baad mein. But here's the main deal, right? Crux of everything. Grignard reagents are prepared by reaction of organic halide with magnesium metal. Matlab Rx plus Mg gives you RMgX. You'll be like, hey, ye kya hua? In an anhydrous ether solvent, ROR, that is ether. ठीक है? Anhydrous मतलब पानी बिल्कुल नहीं होता है. पानी हो तो तुरंत RMgOH बन जाएगा. Okay, X जाएगा भाड़ में और बन जाएगा RMgOH. ठीक है? वो छोड़ो. Not important. ठीक है? At this point, not important. हम लोग alcohols, phenol, ether की बात नहीं कर रहे हैं. So how do you prepare these? You basically take Rx, react with Mg. This is an ether, dry ether. जरूरी है कि dry ether है. And you get this. And the same thing works for aryl compound as well. ARX मतलब some aromatic compound. Right? This is what this is saying. Let me not be lazy. ठीक से बनाते हैं. ठीक है? Cool. Now, this is the cool thing. The bond, actually it's very fascinating. This bond, it's a covalent bond. It's not an ionic bond. And that completely blows everything out of the water, right? Magnesium is supposed to be a metal. It forms a very strong base. Actually, MgOH is not a very strong base. Agar ionic equivalent padhoge, then you'll understand ki why is it that this is even possible. Thank you, Vishal. I've just answered that. Covalent. It's a covalent bond. RMgX is a covalent bond. So there is a charge separation happening for sure, but there's a covalent bond. Okay? They are very, very strong bases. They like to take away H from anywhere they can get. Where will they take away H from? From electronegative atoms like oxygen, nitrogen or sulfur. तो यानी कि SH, NH या OH, अगर किसी भी कंपाउंड में ये तीन चीजें हैं तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब उससे निकाल लेंगे H. निकाल के कहा क्या करेंगे? It will have an acid-base reaction, okay, with water or with alcohol or anything else. We'll keep things simple. Right now, we will not talk about SH and NH, and even with OH, we just talk about water. यहाँ पे हम लोग alcohol भी कर सकते हैं, okay? Also, but right now I'm only talking about water. तो मैंने बनाया अपना, sir, is it only sigma? That's a complicated question, bro. Yeah, I'm going to say yeah, but I'll let me read up on a little bit on JDL and get back to you on that. This concept of sigma bond, I said complicated because yeah, sigma bond has to do with, I'll get back to you on that. Yeah, okay. I'm not going to digress from this, but magnesium or carbon bond is special. Okay? I'm going to leave it at that. Organometallic channel. To give you an answer to that, when you study coordination compounds, can you tell for sure with a sigma bond or a pi bond that's formed between transition metal and the ligand donors? Yeah? If you, let me just leave it at that. Okay? But a great question. It's a great question with us. Okay? So, crux of the matter is, you have Grignard reagent, पानी में डालो, बन गया alkane. Oh! So, essentially what you have done is Rx plus Mg plus water, and there you go, you get RH. मतलब इतना हम लोग घूमे Rx से alkane बनाने में. That's the point of this. Okay? So here you go. Even with alcohol, you get the same thing. Cool? Chalo. I have maybe one question for you, and then we'll call it a day. I know काफी रात हो रही है. एक सवाल है, दो सवाल है, कितना करना चाहते हो? Let me. एक ही सवाल है. चलो, एक ही सवाल करते हैं. Next one, the homework question. Let's do this one. Last question. I'll let you go. Okay. Grignard reagents prepared by the reaction between. थोड़ा simple सवाल दे दिया. NEET Aspirant 2024. What's up, Nuzhat? Welcome. क्लास तो खत्म हो रही है, but anyway, welcome. इस सवाल का आंसर क्या है? This is one of the direct questions, right? Magnesium and alkane, magnesium aromatic hydrocarbon, zinc and alkyl halide, magnesium alkyl halide. थोड़ा सा history lesson दे देता हूँ. D is answer. Yeah. Let me go back to that slide where I said I'll talk about later. This guy won the Nobel Prize, and the main deal was what he did. He started studying maths, and then he got bored of math and he switched to chemistry. Then he was like कि physical chemistry नहीं हो पाएगा भाई, physical में बहुत ज़्यादा maths है. उस पर लोग चलो चलते हैं organic में. जब वो organic में कर रहे थे, उस समय zinc और diethyl ether had been used to make alkanes. Okay? Methylation मतलब कि zinc
and diethyl ether. So ROR basically where R is CH3, C2H5. Okay? So he was doing this. And then he was like, you know what? I don't like zinc. Let me do magnesium. And hence he did this. That was the throwback to this funky slide that I skipped for a second. इसलिए ये ऑप्शन भी है AIPMT 984 में. चलो, that was it from me for today. Thank you. You're all amazing. Have a great Saturday evening. Couple of homework questions. आजकल the homework questions I'm giving you are increasing, getting a little difficult. Try it out. This is the first one. This is the second one. Okay. A quick summary of everything we've done so far. Saloni D. Kheder. Oh, अच्छा already इसका जवाब दे रहे हो. अरे एक suggestion है. Homework question का सवाल आप लोग comments में दो ना after the video gets done, ताकि more students like you are encouraged to try this out. Summary of E1 reaction यहाँ पे है. बहुत बार बोल चुका हूँ. एक और बार बोलूँगा तो I feel you guys will kill me. So I will stop. Elimination and substitution. बस 2 ही slide है. Over that 2 slides, we spoke for about 15-20 minutes. Yeah. You're most welcome, Vidya. And yeah, that's the last thing we looked at today was just now was Grignard reagents. Remember, the goal is Rx. अरे ये तो अलग color हो गया. The goal is Rx plus Mg plus water, one after the other gives you RH. ठीक है? Alkyl halide से alkane बनाना. All right. See you. Have an amazing Sunday. Have fun. That's all from me for today. I'll see you guys again on Tuesday. ठीक है? Bye all. Good night. Vishal, I teach Chem. Let me write that down. I teach Chem. That's my ID on Telegram and on Discord. You can reach out to me in any of those things. I feel like a doctor when I write down. Oh my God, look at that. Wow. Every time I bend, I feel like this guy goes completely out of focus. I know the session's over. हम लोग time pass कर रहे हैं, but it so freaks me out when you're out of focus like that. Okay, anyway, you can connect with me on there. Anything chemistry, we're good. ठीक है, चलो. See you. Bye. Good night, everybody. Thank you so much. Bye.